In precipitation, there are different formations. So these formation are controlled by the earth surface. जैसे हम देखते हैं कि जो अर्थ सरफेस है इस पे वाटर बॉडीज भी हैं और कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स भी हैं एंड सरफेसेस भी हैं. सो दोज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड कवर्स एंड लैंड यूजेस. What is the difference between land cover and land use means कि land cover is a natural environment whereas land use जो है वो under human activities है. So that's why these have different type of situations or environmental conditions. सो दीज आर एक्चुअली द कंट्रोलिंग फैक्टर. जब हम देखते हैं कि एयर में मॉइस्चर है, एयर ड्राई है, एयर कूल है, एयर कोल्ड है, एयर हॉट है, तो इट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल कंडीशन. So this is very important for the formation of the precipitation. Now air which is moving upward is chilled by the adiabatic process, which leads eventually to precipitation. Air can move upward in four ways. So before going to discuss the four major types of precipitation, we must discuss the adiabatic process. What is adiabatic process? Adiabatic process में we have a parcel of air which have a specific type of temperature or particular type of environment उसे कंट्रोल कर रही है उस एयर पार्सल को, और वो एयर पार्सल ना ही टेम्परेचर छोड़ता है और ना ही बाहर से गेन करता है. तो ये जो क्वालिटी है दैट इज़ एक्चुअली अ एडियाबैटिक प्रोसेस है. नेवर गेन द टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड नॉर लूज द टेम्परेचर फ्रॉम द एयर पार्सल टूवर्ड द सराउंडिंग एरियाज. सो दिस मैकेनिज्म जो है इसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द सरफेस एनवायरनमेंट. इफ़ इट इज़ अर्बन एरिया तो वहाँ का एडियाबैटिक प्रोसेस और होगा. इफ़ इट इज़ रूरल इन्वायरमेंट तो वहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस और होगा. वाई? बिकॉज ऑफ द सर्टन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन. So there are four major forms of precipitation. Number one is the convective. Convective वो है जिसमें हम कन्वेक्शनल प्रोसेस भी कहते हैं, यानी उर्दू में हम इसको इसाली रोएं कहते हैं. हवा जब गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है. सो ये कहीं पे भी हो सकता है. ये आपका लैंड सरफेस पे भी है, ये वाटर सरफेस पे भी है. लैंड सरफेस है अगर तो वो अगर ट्रॉपिकल एरिया है या इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे अगर वेजिटल कवर है वहाँ पर ये हो सकता है. इफ़ इट इज़ कवर्ड विद वेटलैंड वहाँ पर हो सकता है. अगर वेजिटल इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी कन्वेक्शन है. सो इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सरफेसेस हैं और उस पर ये कन्वेक्शन मौजूद है. सो व्हेन वी हैव अ प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स जो कि अपवर्ड मूवमेंट है जिसे हम अप ड्राफ्ट्स कहते हैं, तो इससे भी बारिश होती है. सो दिस इज़ कॉल्ड द कन्वेक्टिव लिफ्टिंग precipitation or convectional lifting precipitation. Number two is the orographic lifting. Orographic lifting ko in other word we can say the relief rainfall or relief precipitation. So this is controlled by the area which is actually under the mountainous regions. यहाँ पर क्योंकि बैरियर हैं तो हवाएं जब इनके साथ टकराती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं. ऊपर उठने से वो ड्राई एडियाबैटिक से सैचुरेटेड एडियाबैटिक में चेंज उनमें आती है, यानी वो कूल हो जाती हैं, उनमें मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, वो सैचुरेशन उसमें आ जाती है एंड देन वो चेंज इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाए. सो दिस इज़ कॉल्ड द ओरोग्राफिक प्रोसेस और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग mechanism. Number three is the frontal. So here we have the front. So between the warm and cold environment. So air masses move करती हैं जब उनकी जो है again are controlled by the environmental conditions. Some air masses are moving from the maritime environment. Some are moving from the continental environment. So इस तरह से इनमें different capacities होती हैं, different इनकी जो है वो densities होती हैं, different इनके characteristics होते हैं. सो वो पोलर एरिया से भी आ सकती हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन से भी, इक्वेटोरियल रीजन से भी वो निकल सकती हैं. सो दोज आर एक्चुअली द एयर मासेस कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन. सो इसमें जो है फ्रंट्स बनते हैं जब ये दोनों आपस में कोलाइड इनमें होता है या टकराती हैं, तो देन वी हैव द फ्रंटल रेन. सो दिस इज एक्चुअली द रेन विच इज कॉज्ड बाय द collision of the air masses. Number four is the convergent. So
Here, this mechanism is controlled by the equatorial region, जिसको हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं. ये जोन जो है इंसोलेशन से कंट्रोल होती है, यानी वो एरिया जहाँ पर वर्टिकल रेज सन की होती हैं, वहाँ हाई टेम्परेचर की वजह से एयर लिफ्ट करती है. लिफ्ट करने से वहाँ गैप लो प्रेशर क्रिएट होता है, और वो लो प्रेशर जो है हाई प्रेशर से विंड कवर करती हैं. सो ये जो कन्वर्जेंट लिफ्टिंग मैकेनिज्म है, इससे रेन होती है, is the most important area where we have the highest rainfall of the world. So this is controlled by the ITCZ, Intertropical Convergence Zone. So number one is convective lifting. Precipitation is generally more intense and of shorter duration than other forms of precipitation. Convective clouds are cumulus nimbus and cumulus. So those are the major clouds which are, or major cloud types which are actually formed during the process of convection. Air can also be forced upward through convection, leading to convective precipitation. In this process, strong updrafts occur within convection cells. Vertical columns of rising air that are often found above warm land surfaces. Air rises in a convection cell because it is warmer and therefore less dense than the surrounding air. The convection process begins when a surface is heated unequally, like agriculture field. So this slide shows the agriculture environment. Here we have again the process of convection. The field surface is largely made up of bare soil with only a low layer of vegetation. So under steady sun rises or sun shines, the fields will be warmer than the adjoining forest. This means that as the day progresses, the air above the field will grow warmer than air above the forest. The density of the air depends on its temperature. Warm air is less dense than the cooler air. The convection occurs when the Earth's surface with the unstable or moist atmosphere becomes heated more than its surrounding, leading to significant evaporation. So what is the instability or unstable air? क्या होती है? When the environmental temperature lapse rate is greater than the dry adiabatic lapse rate is called the unstable air. So here one thing is very important, that कि convection में unstable होना एयर के की वजह से वहाँ पर इन्वायरमेंट में चेंज आती है. सो कन्वेक्शन जो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, falls over an area for a relatively short time. Convective cloud have limited horizontal extent. Most precipitation is in the tropics appear to be convective, caused thunderstorm. So the most important area under the convection or the convective precipitation is the tropical region. और यहाँ पर हमें जो thunderstorms हैं वो लैंड सरफेस है या सी सरफेस है, वो ड्यू टू द कन्वेक्शनल लिफ्टिंग मैकेनिज्म से हम देखते हैं. अनस्टेबल एयर वार्म है, मॉइस्चर है उसमें, एंड हीटेड बाय द सरफेस can produce abundant convective precipitation. So it is why, because of the unstable air, so that's why this is one of the very important component of the convective precipitation.